First property लिखो property 1 linearity property linearity property linearity property कन्वोल्यूशन थ्योरी रे एग्जाम रे आसी हला तार प्रॉब्लम ला प्रैक्टिस करियो सुनो सबरे माइंड रे रखिबो जेतिकीटा थ्योरम अछि ताको लिस्ट कर दो सिलेबस देखियो गोटे लिस्ट कर देलो थ्योरम थ्योरी जे ट्राई करबो 2 रु 3 पेज गोटे नोट आकार करबो केमति डेफिनेशन लिख देलो फार्मूला लिखि देबो फार्मूला लिखि दी गोटे गोटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दो जेटा इजी सब प्रॉब्लम थियो ताको प्रैक्टिस कर देलो आ सेटा को सब प्रैक्टिस कर दो आराम से ही माने एटलीस्ट मासे भी थोड़े लेकर प्रैक्टिस करते भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी लिख लो लिनियरिटी होची LINEARITY हला लिनियरिटी प्रॉपर्टी लिनियरिटी प्रॉपर्टी रे कोन आसीबो देखो if लिखो if f1 omega and f2 omega if f1 omega and f2 omega are Fourier transform of f1t and Fourier transform of f1t and f2t respectively then एटी देखो f1t नो फोरियर ट्रांसफॉर्म होची f1 ओमेगा f2t रो होची f2 ओमेगा then फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of c1 f1t plus c2 f2t देखो जोटा कैपिटल F लिखछि सेटा होची फोरियर ट्रांसफॉर्म को बुझोछि एटा स्मॉल f लिखा होची सेटा होची फंक्शन हैला t इक्वल टू c1 f1 ओमेगा प्लस c2 f2 ओमेगा सोडा होची लिनियरिटी प्रॉपर्टी होची f1 ओमेगा और f2 ओमेगा जे लिखबो फोरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट और सेकंड रे लिखबो ताले ताको c1 होची कांस्टेंट हैलो एटा होची कैपिटल स्मॉल c एटा होची कैपिटल C माने ट्रांसफर हे साला परे कांस्टेंट भी चेंज हुए बुझेला तो c1 c2 स्मॉल एटी c1 c2 होची कैपिटल that means c1 c2 ए दीटा अलग where c1 c2 are constant where small c1 and small c2 are constant एटा होची लिनियरिटी प्रॉपर्टी तुम प्रॉपर्टीज रे देछि बुक रे माने सिलेबस रे देछि ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी उठा अछि
आ गोटे अच्छी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आ गोटे अच्छी तुम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी है कि आम ये सब प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करवा ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी जेटा सेटा होची लिनियरिटी प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन जेटा सेटा होची लिनियरिटी प्रॉपर्टी यार मु प्रूफटा जाऊनी मु केवल प्रूफ जी कहार कहल चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से तार प्रूफ देखिए आउ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से डेरिवेशन देखिए है ना सेकंड लेख सेकंड 2 एटा 1 रे गला लिनियरिटी प्रॉपर्टी 2 रे लेख 2 रे होची चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी change of scale property लिखो if f omega means already Fourier transform हो सारी तो f omega माने Fourier transform of a function माने f of t रो f omega आसी माने रखिबो जते कैपिटल f omega लिखा होची दैट मींस गोटे f of t अछि जहार Fourier transform होची माने एटा Fourier transform of f of t टा होची f of omega सब मन रखिबो हला गोटे फंक्शन रो Fourier transform होची हला देखो if f omega is the Fourier transform of small f t लिखो f of t कौन लिखला Fourier transform of f of t small f of t that means f of t रो Fourier transform होची f omega ना f of t then the Fourier transform of then the Fourier transform of f of at then the Fourier transform of f of at is कौन आसीबो ना देखो 1 by a f omega by a हला मन रखिबो माने Fourier transform of this function यदि f of t रो Fourier transform है ओमेगा होले लेट नहीं हॉस्टल में रोम जाई हॉस्टल रोम नहीं रोम माली में रोहित लेट आछे ना सेबे एबे दोनों पड़ो सॉरी यार क्लास देखो यदि ए कंडीशन हला यदि f of t रो Fourier ट्रांसफॉर्म होचे ओमेगा ताले f of a t रो Fourier ट्रांसफॉर्म होबो 1 by a f omega by a हैना एटा मन रखियो एटा हम देखियो प्रूफ देखियो प्रूफ लिखो प्रूफ एटा लिखो लिखसा चनाडा तो यार प्रूफ कोन आसीबो प्रूफ आबो देखो हमें Fourier transform of f of t equal to the 1 by root over of 2 pi integration minus infinity to infinity f of t e to the power minus I omega t
dt नुहे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t होची कोन 1 by root over 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी रो इनफिनिटी f of t e to the power minus I omega t dt एटा रट्टा मार्क होता ए फॉर्मूलाटा मुखस्थ काना जत्ते प्रॉपर्टी प्रूव करी होय पई जीवो आगे फंक्शन गोटे नबो तार f of t टा ज्ञात कर बुझा बोला सेमती यदि मो f of t a t नेबी f of t f of a t ने माने फंक्शन टा के t थिला मो a t नेबी होला ताले कोन चेंज आसको को देखो 1 by 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी एडी f of t जरा कोन लिखिबे f of a t e to the power minus I omega t dt हैला देखा जतले इंटीग्रेशन मन रखियो फंक्शन टा एटी आकार अछि किंतु इंटीग्रेशन अछि dt आकार नै तने हमें एटी टा को गोटे सिंगल टर्म को आनिबा लेख लेट at equal to y at equal to y तने dt equal केता हो यदि at equal to y हला a dt equal to dy नहीं कि एटा कांस्टेंट यार डेरिवेटिव है यार को डेरिवेटिव होला a dt इक्वल टू dy चले dt इक्वल होता है सो dt इक्वल होता है सो वाला dy बाय नहीं कि लेक्चर लाना सब लेक्चर कि ना प्रैक्टिस करबो ओडा घरे जाकी एडा पढिबो ए जो प्रूव द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एमटी भी आसी करे किबा या बदले ओडे प्रॉब्लम दे दबो लेक्चर ना तापर लेखो एबे देखो म ई वैल्यू को कोन करबे ए वैल्यू को एडी रे पुट करबे तो लेखो f of t f of a t equal to एटा लिखो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ या तळे लिखो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of a t equal to एटा तळे एटा लिखिबो अथरे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of a t equal to 1 by root over 2 pi देखो एबे ए a t जरे कोन लिखबी y लिखबी कोन लिखबी y आउ ए जो dt जरे कोन लिखबी dt जरे dy by a नहीं कि आउ ए जो t जरे केते लिखबी कहलो t जरे y by a t जरे कोन लिखबी y by ए नंबर a t equal to y लिखि ना t जरे केते लिखबी y by a तेन मोर टोटल एटा कोन होला y टर्म रे कन्वर्ट हे बुझिबा लागि ना सेटा कोन होला y टर्म रे कन्वर्ट होला लेक्चर ला खाली वैल्यू टा चेंज कर देले एडी a t थिला y लिखली एडी t थिला y by a लिखली एडी dt थिला dy by a लिखली इक्वल टू दिया इक्वल टू अबे 1 by a टा को बाहर ने असली 1 by a 1 by root over 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of y to y होला f of y e to the power minus I omega by a y dy देखा मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म देखे थिले कोन था कहलो 1 by root over 2 pi केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म देखियो ए इक्वेशन को ए इक्वेशन सहित कंपेयर करियो
कौन एक्स्ट्रा आछि ना 1/a बाकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा अनुसार हेछि y अनुसार हेछि नै सो y जगह में केते लिखिबी ताले दिस इक्वल टू लिखिबो इंप्लाइज दैट लिखियो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of a t equal to 1/a f omega by a क्या नंबर ये कौन था माइनस आई ओमेगा टी था ओमेगा जगह पे कौन है ओमेगा बाय ए अछि नै तो मोर एटा f of omega by a रो कौन अछि फोरियर ट्रांसफॉर्म तो एटा अछि प्रूफ एटा प्रूफ नै मोर खाली यदि f ओमेगा था एटा कोन था 1/4 एटा f t था e टू द पावर i ओमेगा t dt था नै कि तो एडी f t जरे y अछि तो एठी भी y अछि त एटा मोर जहा रहले बाकी ए चेंज ता कोन अछि ओमेगा बाय a अछि ओमेगा बाय a रो एटा अछि फोरियर ट्रांसफॉर्म बुझा बोलला चलो f of a t नो एटा कहले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी a रो वैल्यू यदि 1/a आसीबो ताले यदि ओमेगा a आसीबो यदि मो एटा धर f of a t रो मान करबी f of और t by a रो मान करबी ताले हम a जगह केते 1/a को करछ ना सेनो एटी 1/a हेले a ओमेगा आसीबो तो a रो वैल्यू अनुसार एटा चेंज आसीबो नेक्स्ट आलो नेक्स्ट होची थर्ड प्रॉपर्टी होची शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी if देखो if f of omega if capital F of omega देखो सब बड़े मन रखियो f of t टा इधर को स्मॉल f of omega इधर को कैपिटल है काहे ना f of t जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हेले जाय कि एटा आसी तो लिखिबा f of omega को कोन आसे ना f of omega इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t देखो f of omega is the Fourier transform of f of t Fourier transform of f of t then से दिन काहे कि रहलन रे पर दिन काहे कि आसिलो 10:30 रे रहइबो कहउछले रे काहे पड़े हां 10:30 रे रहइबो कहउछले काहे पड़े if f of omega is the Fourier transform of f of t, then Fourier transform of f t plus or minus a f t plus or minus a देखो एटा शिफ्ट करछ t रो वैल्यूटा कोन अछि आइदर पॉजिटिव को शिफ्ट करिवो नहले नेगेटिव को शिफ्ट करिवो केते शिफ्ट करिवो a केते टर्म शिफ्ट करिवो तेनो याको कोन कहै छै शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कोन कहला शिफ्टिंग तले f t plus or minus a is given by
କାଲିର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲୁ ପଡ଼ିଛି is given by कौन तार फॉर्मूला ना e प्लस और माइनस I ओमेगा a f of ओमेगा where a is constant where a is constant where a is constant तो यार फॉर्मूला ला e टू द पावर प्लस और माइनस I ओमेगा a f of ओमेगा where a is constant एटा प्रूव करबा देखो प्रूफ लेक्चर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो यार f of t देखो Fourier ट्रांसफॉर्म of f of t plus or minus a आज रहिबो रे क्लास हो वेब क्लास हो नाले सॉरी बनी आगे दी चाहिए एग्जाम f t plus or minus a equal to 1 by root over of 2 pi integration minus infinity to infinity f जारे f t एडी हम कोन जे t plus or minus a तो फंक्शन भी सिंपल लिखा t plus or minus a e to the power minus I omega t dt सब ए जो फंक्शन टा मन लगो सेठी ए जो फंक्शन टा ना एटी थिला ताको हमें y कंसीडर कर सब फंक्शन टा को सिंगल वैल्यू आकार नवा ପାଇଁ चेष्टा करू तने ए केस रे कोन करियो t प्लस और माइनस को y न बुझबा लागि लेट देखो लेट t प्लस और माइनस इक्वल टू y देखो एटा तो कांस्टेंट ना एयर वैल्यू जहां ले भी सेम तने dt इक्वल टू dy dt इक्वल टू dy बुझलो dt इक्वल टू dy तबे एई वैल्यूटा पुट करबा फर्स्ट इक्वेशन तो कोन आसको कहला लेखो f of t एटा लेखो f of t Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन t plus a एटा थोड़ी लेक्चर तो तले f of t f t plus or minus a equal to देखो म एई वैल्यूटा को एटा रे कोन पुट करिवो y पुट करिवो कोन पुट करिवो एटी y f of y then e to the power मोर ए t रे वैल्यू केते t रे वैल्यू केते आसबो वेरी गुड y एटी प्लस माइनस थिला ना t रे वैल्यू कोन आइबो एटी माइनस प्लस a ना ताले t रे वैल्यू कोन लिखबी y माइनस प्लस a dt जाय कोन लिखबी d वेरी गुड बुझ लगी f of y e to the power minus I omega y plus minus plus a dy नेक्स्ट आसीबो इक्वल टू एटी देखो माने ए टर्मटा कांस्टेंट आछनी एटी माइनस I ओमेगा a ए टर्मटा बाहर पळे आछो ताको मते दीटा टर्म करबे गोटे आछो e टू द पावर माइनस I ओमेगा y और आछो इनटू e टू द पावर प्लस माइनस e एंड माइनस के प्लस माइनस y आछो नै तने मोर एटी कोन होते बी e टू द पावर
प्लस माइनस आई ओमेगा ए से टर्म टाको हम बाहर को नहीं आसी कांस्टेंट टर्म बुझ पाले कि नहीं एटी देखो ए माइनस टा एटी माइनस प्लस होची चलो माइनस टा माइनस माइनस एटी प्लस टा होची माइनस तेनो एटा कोन आसी कोनी से फर्स्ट टर्म को आसी प्लस माइनस आई ओमेगा ए नेक्स्ट 1 by root over of 2 pi थिला 1 by root over of 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of y e to the power minus I omega y minus plus a dy हला माइनस आई ओमेगा y माइनस प्लस a dy यार इंटीग्रेशन हेला यार इंटीग्रेशन कले ए टर्म टा आसी कोनी यार इंटीग्रेशन टर्म टा रहबो तो ए टर्म टा कोन लिखो e टू द पावर प्लस माइनस i ओमेगा a f ऑफ ओमेगा एटा तो एटा नहीं एटा कौन से एटी किंतु देश से कौन कहले दीटा लिखी हमें दीटा लेक्चर के नहीं सीधा हां गोटे तो बाहर कर दिया ना सेटा काटी दियो एटा काटी दियो बुक रे भूल देई चला बहरे प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी सेटा रही हेल्ले कौन आसो e टू द पावर प्लस माइनस आई ओमेगा ए एफ ओमेगा एबे प्रूफ करियार दिले प्रूफ है नेक्स्ट आ जाना अच्छा लेकिन तो ए बोई रे सीधा काटी दो होला तो मैं काटिए दरकार नहीं खाली गोटे फोर्थ पॉइंट लगा मॉड्यूलेशन थ्योरम फोर नो जी मॉड्यूलेशन थ्योरम फोर्थ पॉइंट होची मॉड्यूलेशन थ्योरम फोर्थ पॉइंट होची मॉड्यूलेशन थ्योरम इफ f ओमेगा कैपिटल f है इफ f ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t सब रे देखो सब प्रॉपर्टी फर्स्ट लाइन टा एटा नहीं इफ f ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t then Fourier transform of f of t cos at then Fourier transform of देखो f of t cos at Fourier transform of f of t cos at is given by on a half f omega minus a
प्लस हाफ एफ ओमेगा प्लस ए ओमेगा प्लस ए हाफ एफ ओमेगा माइनस ए एटा सिलेबस रे नहीं मु यार प्रूफ दउ नहीं है ना यार प्रूफ को नहीं तुम किंतु प्रैक्टिस करियो जो पॉइंट रे बुझी न करियो पछारी सिलेबस रे एटा नहीं फिफ्थ पॉइंट लेखो फिफ्थ पॉइंट लेखो एटा सिलेबस रे अछि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फिफ्थ का देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कौन ना f ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 by 2 pi फॉर्मूला का लिखिबा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f of t e to the power minus I omega t dt omega t dt taking complex conjugate on both sides देखो taking complex conjugate on both sides taking complex conjugate on both sides कौन आसो ना f star f star omega conjugate means star दे जाए f star omega equal to 1 by root over of 2 pi minus infinity to infinity f star t e to the power I omega t dt देखो एडी देखो कौन चेंज आसला conjugate रो एटा स्टार आसला देखो 1 by 2 pi रो conjugate से 1 by 2 pi f t रो conjugate होची f star t आ एडी माइनस थिला माइनस रो conjugate कोन प्लस आसे माइनस रो एति के ओ कोन यदि मो f star माइनस देबी देखो f star माइनस ओमेगा यदि आसीबो कोन आसीबो माइनस ओमेगा यदि आसीला कोन आसीबो 1 by root over of 2 pi minus infinity to infinity f star t e to the power minus I omega t dt implies that f star minus omega equal to Fourier transform of f star t एटा गोटे प्रॉपर्टी माने देखो एटा तो बुझा पड़ची यदि f star minus omega होला से f star minus omega देखो ना फर्स्ट जो फंक्शन लेते ft रो कंजुगेट रो तारो यदि ft रो कंजुगेट कोन है यदि माइनस आस्तियो सेटा प्लस हिजबो ना माने यार फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले माइनस टा पोटल बुझियाल तार प्रॉपर्टी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म सरला का होय ओके